एक तो कंसेप्ट और एंड वाला, ठीक है। m+n, अगर मेरे को एक चीज करने के m तरीके हैं, दूसरी चीज करने के n तरीके हैं, नंबर ऑफ फेजेस m+1 if we are doing either this or that, and the other thing is m×n। फिर हम लोगों ने बात करी कि सपोज करो मेरे पास 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स हैं और मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पर मेरे पास 5 ऑप्शन है, यहाँ पर 5 ऑप्शन है, यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो ये 5 क्यूब हो जाएगा। या अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स थे और r प्लेसेस थे तो ये n×n-n⁻r हो। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पर n वेज, यहाँ पर n-1 वेज, डॉट डॉट डॉट, तो हम इसको npr कह देते हैं, विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n-r। इस तरह की बात हमने कर ली थी। फिर हम लोगों ने थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केस करना शुरू कर दिया था। जैसे मैं कह रहा था कि अगर कृष्णा को अरेंज करने के तरीके 7 फैक्टोरियल हैं तो मयंक को अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर डबल ए आ गया। तो a1 a2 को अगर मैं अलग अलग मानता तो 6 फैक्टोरियल तरीके होते हैं, डबल ए के लिए उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास कोई वर्ड था AAA BB C D D T, तो मेरे पास टोटल 9 चीजें हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ पेज हुए 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई AAA के लिए 3 फैक्टोरियल, डबल बी के लिए 2 फैक्टोरियल, सी के लिए 1 फैक्टोरियल और ट्रिपल डी के लिए 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम लोग, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग इस तरीके से काउंट फॉर करेंगे। फिर हम लोग ग्रुपिंग की बात कर रहे थे तो कुछ इस तरह से चलता था। चलो पूछ लेता हूँ, तुम ही लोगों से पूछ लेता हूँ। ये क्लास थी कुछ पता नहीं, याद नहीं कल क्या थी, 6 बॉयज प्लस 4 गर्ल की क्लास थी, समथिंग लाइक दैट। और मुझे एक केस बनाना था जहां पे बॉयज आर टुगेदर, ठीक है। मैंने कई केस कराए थे बट एक करके बता लेते हैं आज। तो अगर मुझे सारे लड़कों को एक साथ रखना है तो इसेंशियली मेरे पास वो एक ग्रुप बन गया, एंड देन देयर आर 4 गर्ल्स। तो टोटल ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या हो गए, G1 G2 G3 G4। तो 5 ऑब्जेक्ट्स हो गए जिन्हें मैं 5 फैक्टोरियल बेस पे रीअरेंज कर सकता हूं। अब जब मैंने इस ग्रुप को आपस में बॉयज को रीअरेंज करना चाहा, बिकॉज देयर आर 6 बॉयज, तो इस ग्रुप में रीअरेंज करने के मेरे पास 6 फैक्टोरियल बेस हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ बेस 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह की बात हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग एक वो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन किया था, उसमें सचिन हमारा वर्ड था। तो हमने कहा था कि भाई सचिन को अगर हम डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे। ए से स्टार्ट करने वाले कितने वर्ड होंगे, कोई बताएगा? 120 या 5 फैक्टोरियल। तो अगर मैंने ए से स्टार्ट किया तो अब 6 में से मैंने ए तो एक अरेंज कर दिया है, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। बचे हुए पांचों जो लेटर्स हैं हमको अरेंज करने के, विच इज बेसिकली 120। फिर ऐसे सी से 120, एच से 120, आई से 120 और एन से 120। ये टोटल एडअप होकर के 600 आ गया था कल वाली क्लास में। और फिर इसके बाद एस से वर्ड स्टार्ट होगा, और एस से जो पहला वर्ड था वो सचिन ही था, इसलिए इसकी पोजीशन 601। ये हमारा परमुटेशन का बेसिक आइडिया था जो हम लोगों ने कल किया था। अब हम लोग यहाँ से कॉम्बिनेशन पे चले जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन समझने के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट आइडिया क्या है, प्रॉब्लम देख लेते हैं। मान लो मेरे पास 10 डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है, और मेरे पास 2 काम है। एक बैग में मुझे 3 बुक्स भर के स्कूल ले जाना, और स्कूल में मुझे अपनी टेबल पे इन बुक्स को
अरेंज कर देना। ठीक है, तो दो काम क्या है, पहले स्कूल ले जाएंगे, स्कूल में जब मैं बैग में भर के ले जा रहा हूँ उन बुक्स को, तो व्हाट्स हैपनिंग, वो कोई सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, मान लो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की बुक लेकर के गया, तो ये मैटर नहीं करता है कि मैंने फिजिक्स की बुक पहले रखी है, केमिस्ट्री की बुक पहले रखी। इसको ले जाने के तरीके एनसीआर कहलाए। तो साहब एन ऑब्जेक्ट्स, उनमें से मुझे उनको आर प्लेसेस में, उनमें से आर को सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो 10 लोगों की 10 बच्चे हैं, उनमें से मुझे 6 बच्चों की टीम बनानी है, मेरे पास 10 बुक्स है, उनमें से 3 बुक्स को बैग में रख के ले जाना है। इस तरह की जो प्रॉब्लम है, इसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, उसको हम लोग एनसीआर कहते हैं। जबकि उन 10 बुक्स को अगर मुझे 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो उसको हम एनपीआर कहते हैं। बिकॉज न सिर्फ हमें ये डिसाइड करनी है कि मैं कौन सी 3 बुक लेनी है, साथ में ये भी डिसाइड करना है कि प्लेस नंबर 1 पे कौन सी बुक रखी जाएगी, प्लेस नंबर 2 पे कौन सी बुक रखी जाएगी, और प्लेस नंबर 3 पे कौन सी बुक रखी जाएगी। तो यहां पर पीसीएम और एमसीपी या ऐसे और जो दूसरे अरेंजमेंट है, वो एक ही चीज होगी। जबकि यहां पर मैं फिजिक्स की बुक रखूं या मैथ्स की बुक रखूं, ये अलग अलग केस। तो इसको अगर रिलेट करना चाहें, तो मैंने क्या किया, 10 बुक्स में से 3 बुक्स सेलेक्ट की। ये नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 10c3, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है। अब जब मैं इसको क्लास में ले जाकर के अरेंज करना चाहूंगा, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल। बिकॉज अब मेरे पास 3 बुक है, आई हैव टू पुट देम एट 3 प्लेसेस। तो essentially step 1, step 2, so the total number of ways, which is 10p3, will be equal to nc3 into 3 factorial। ठीक है, 10 बुक में से 3 बुक अरेंज करने के तरीके को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। 10 बुक में से 3 बुक चूज करना और फिर उन 3 बुक्स को अरेंज करना। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो 10p3 की वैल्यू हमने कल पढ़ी थी, 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये यहां नीचे आ जाएगा, 10c3 की वैल्यू आ गई। या इन जनरल npr इज इक्वल टू ncr इंटू r फैक्टोरियल। तो यहां से ncr की वैल्यू हो गई npr अपॉन r फैक्टोरियल, जो कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम बनता है कि ncr इज इक्वल टू ncn माइनस r। मेरे पास 10 बच्चे थे, मुझे उसमें से 6 बच्चों की टीम बनानी है। तो जब भी मैं 6 को सेलेक्ट करूंगा, एक 4 अलग सेलेक्ट हो जाएंगे, जो सेलेक्ट हुए और जो 4 नहीं सेलेक्ट हुए। तो 10 में से 6 बच्चों की टीम बनाओ या 10 में से 4 बच्चों की टीम बनाओ, एक ही चीज है। इसलिए एनसीआर की वैल्यू एन माइनस आर हो जाती है। और ऑब्वियसली फॉर्मूले से तो एक हो ही जाएगी, बिकॉज न्यूमरेटर में एन फैक्टोरियल आएगा और नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये बेसिक बात हो गई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। अब हम लोग यहाँ से एक्चुअली प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि मेरे पास एक सैंपल स्पेस है, मैं इसको वेन डायग्राम से दिखा सकता हूं। और इसमें कोई एक इवेंट स्पेस है। तो पहली चीज तो क्या है जो बेसिक है प्रोबेबिलिटी का, वो ये है कि अगर मेरे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is ne by ns and is equally likely is very important। मैं हमेशा एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं कि सपोज करो मैं कुतुब मीनार से नीचे कूदा, तो मेरे बचने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक नजर से देखा जाए तो 2 ही आउटकम है, या तो बचेंगे या तो मरेंगे। इसलिए बचने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। लेकिन ऑब्वियसली ये लॉजिक जो है वो अच्छा नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली बोथ इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, तो प्रोबेबली मेरे बचने की प्रोबेबिलिटी, oh sorry, so basically the whole idea is, suppose I have a sample space and there are a number of events in it, so we can use this formula P is equal to ne by ns only if all the outcomes are equally likely। तो मैं एग्जांपल यूज करता हूं कि मैं कुतुब मीनार पे गया और वहां से जंप किया,
there are two outcomes. Either I will live or I'll die. So what is the probability of my being living after the jump? तो उसको half नहीं कह सकते because both events are not equally likely. तो ये जो बेसिक गड़बड़ है ये कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज कर देती है प्रॉब्लम में. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन वी आर डिवाइडिंग द इवेंट्स दे शुड बी इक्वली लाइकली. अब यहाँ से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं और उसको धीरे धीरे विल बिल्ड अप इनटू द डिफिकल्ट वन. तो सपोज करो मेरे पास आई हैव वन डाइस एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू. So idea is very simple. There are 6 outcomes. One of them is 2. Probability of getting 2 is 1/6. Okay. So मेरे पास एक dice है. We have one dice. And what is probability of getting an even number? So probability of getting an even number will be 6 outcome है. इसमें से कितने even number है? 3, 2, 4, 6. इसलिए probability is 3/6. ऑब्वियसली ये इतना सरल क्वेश्चन है कि एग्जाम में आएगा नहीं. अब हम इसको थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं. मेरे पास 2 डाइस हैं, ठीक. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में 36, सॉरी माय मिस्टेक. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग sum is equal to even? Okay, so if I'm getting 1, 3, then the sum is 4, which is allowed. If I'm getting 1, 5, then sum is 6, which is allowed. But if I'm getting 2, 3, where sum is 5, then they're not allowed. So अभी टोटल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग जो थी वो यूज की. पहली डाइस पे 6 वेज हैं, दूसरे वाले पे 6 वेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 6 × 6 36. Problem comes how to get the even number. So I'll have to break this problem into some small steps. So if I have two number x and y and I want this sum to be even, x varies from 1 to 6, y varies from 1 to 6. So even number कैसे आ सकता है? Either even plus even or odd plus odd. These are the two ways in which we can get even number. अब मुझे कौन बताएगा कि अगर x और y दोनों इवन है, 1 से 6 तक अलाउड है, और x और y दोनों इवन है, तो ऐसे कितने केस बनेंगे? तो ऑब्वियसली एक तरीका तो है कि मैं 2, 2, 2, 4, 2, 6 काउंट कर लूं, बट दैट इज नॉट व्हाट आई वांट. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बताओ कि कितने तरीकों से x और y दोनों इवन होंगे अगर वो 1 से 6 के बीच में लाई कर रहे हैं. एनीवन? Anyone? 6C2. 6C2. Oh. Now 6C2 is very wrong answer. 6C2 का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो देख लेते हैं. 6 × 5/2 15 हो गया. ठीक है, ये हमने, ये मेरा आंसर होता अगर मुझे 6 में से कोई 2 ऑब्जेक्ट चूज करने होते. इसमें नंबर इवन है, ये बात कहीं आई ही नहीं. उन 6 में से 3 नंबर इवन है, तो चांस की बात है ना कि मेरे पास नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे. सपोज करो मेरा नंबर होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12. तो इसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई चूज द इवन नंबर? वो 1 हो जाता. ठीक है ना? तो यहां पे 6C2 लगा देना ये प्रॉब्लम है. पक्का समझ आई बात की नहीं? यस सर. यस सर. ठीक है, 6C2 होता अगर मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट होते और मुझे 2 चूज करने होते. पहली बात तो क्या, मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट है, उसमें मुझे एक चीज चूज करनी है. मैं पूछ रहा हूं कि x इवन है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, y इवन है, या किसके नंबर ऑफ वेज क्या है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे यार देखो x और y मुझे 2 नंबर चूज करने हैं. पहला वाला नंबर इवन हो, इसके चूज करने के कितने तरीके हैं, ये इस कॉम्बिनेशन से देखा जाएगा. अगर मेरा मेरे नंबर 1 to 6 हैं, उसमें कौन कौन से नंबर इवन हो सकते हैं? 2, 4 या 6. तो पहला नंबर इवन चूज करने के वेज कितने हैं? 3. इज इट क्लियर?
Excuse me, sir. जी Sir, can you please repeat that in English? Oh, sure. So I have two dice. X is the number that I get on the first die, Y is the number that I get on the second die. What are the number of ways the number that I got on the first die is even? So it can either be 2 or 4 or 6. So number of getting in the number of ways of getting an even number on first die is 3. Similarly, number of ways of getting an even number on second die is also 3. It's 2, 4 or 6. Therefore, both are even. What is the number of ways? 9. 3 plus 3 or 3 into 3? 3 into 3 3. into 3. 3 into 3 because they are happening simultaneously. They are related by an and. They are not related by an or. Okay. So the number of ways when both number of even is 9. Similarly, what is the number of ways of getting an odd number on the first die? Just 3. Odd number on the second die, that is also 3. And since I'm getting both odd numbers together, we'll have a multiplication. So number of ways of getting an odd and odd is 9. Number of ways of getting even and even is 9. Now when you go to total number of ways, it is either this or this. The total number of ways will be 9 plus 9, 18. Are you getting it? Yes, sir. Yes, So, sir. so the probability that sum of numbers in throw of two dice is even will be 18 upon 36. Let me repeat it once again for revision. I have two dice, 1 to 6, 1 to 6. I want sum to be even. So I said total number of ways, number of sample spaces, 6 into 6, 36 space. Any doubt about that? No, sir. Clear. No. Okay. So total number of ways is 6 into 6. Now I want sum to be even. So one way is that I counted it. It will be 2, 2, 2, 4, 2, 6. But that's a long process. But even if I do it, it will be 2, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 2, 6, 4, 6, 6. These are the 9 ways of getting even an even number. And what I was saying, the number of ways of getting an even number on the first die is 3, 2, 4, 6. Number of ways of getting an even number on the second die is 3, 2, 4, 6. Therefore, total number of ways is 9. Is that clear? Yes, sir. Similarly, another way of getting a sum of even is when both of them are odd, which will happen when we have 1, 1, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 1, 5, 3, 5, 5. So 3 ways of choosing the first odd number, either 1, 3, or 5. 3 ways of choosing the second odd number, which is 1, 3, 5. Therefore, total number of ways of choosing odd and odd is 3 into 3, 9. Now, the sum will be even if it is this case or this case. So since these two operations are associated with an or, total number of ways will be 9 plus 9, which will be 18, and therefore probability will be 18 by 30. Okay? Is it clear? Yes, Yes, sir. Good. Now, this is a question from previous year that instead of 1, I have 3 dice. But the question is very easy. They are asking, what is the probability that sum is greater than equal to 16? Okay. So obviously, if I have
3 dice, the number of elements in sample space will be 6 into 6 into 6, 260. That's clear? That is not a problem. The real problem is how can I get a sum of 16 or more than 16? So sum can be 16, 17 or 18 because that's the maximum we can have. Okay. In the case with the 18 is very simple. 18 we can get if I get 6 plus 6 plus 1, only one case. Any problem? No, sir. Good. 17 I can get if I have 6 plus 6 plus 5. 6 plus 6 plus 5, and this can be done in 3 ways. 3 ways. Now, you can say that the number of ways is 3 because you can think about it. You can see it. It is either 665 or 656 or 566. But from formula, this 3 is 3 factorial upon 2 factorial into 1 factorial. And why I'm telling you this formula? Because suppose instead of 3 numbers, there are 10 numbers. You can't just think about it. So what is happening? I have 3 objects, out of which 2 are of type 1 and 1 is of type 2. Therefore, total number of ways of arranging these objects is n factorial upon k1 factorial into k2 factorial in the denominator, that kind of a thing. Okay. So it will be 3 factorial upon 2 factorial into 1 factorial. 3 ways. Similarly, how can I get a sum of 16? It is 6, 6, 4 or 6, 5, 5. Okay. So now we have 2 ways of getting 16. Either 6, 6, 4 or 6, 5, 5. As we have did over here, 6, 6, 4 can be arranged in 3 ways because it is 3 factorial divided by 2 factorial into 1 factorial. 6, 5, 5 again in 3 ways. 3 factorial divided by 1 factorial into 2 factorial. So 3 and 3, total number of ways of getting 16 is, since they are related by an OR, total number of ways of getting a 16 is 6. Therefore, sum greater than equal to 16 is 6 plus 3 plus 1. Total number of ways is 10 and the probability is 10 upon 216. Is it clear? Yes, sir. Now, problem will be very difficult if I ask you what is the probability that sum is greater than equal to 13. Because then the number of cases will balloon up. Okay. Number of ways of doing 15 will be more than 16. Number of ways of sum of 14 will be more than 15. But we assume that in the examination, they will not ask these kind of questions where the number of cases are very, very large. They will ask something which is doable in a exam kind of a situation. Okay. Should we move ahead? Yes, sir. Yes. So another question from previous year net question is something like this, and I want to do it. I have numbers from 1 to 15. I have to pick 2 numbers such that sum is equal to 50. Okay. So this is also a very easy question. But instead of me doing it, I want someone from the class who will do it. Okay. So probability of event is NE by NS. What is NS? 15C2. 15C2. Anyone? Anyone with a different answer? So 15C2 may or may not be correct. Okay, and I'm telling you why may or may not be correct. The question is, you never asked me
whether repetition is allowed or not. Can I pick Sir, voice is Sir, not you're not clear. audible. sorry, so I may have lost the voice. Is everything clear? Yes, sir. Sorry. So the problem with 15C2 is 15C2. What is 15C2? It is 15 into 14 divided by 2 into 1. So you are saying the first way of picking the 15 ways of picking the first number and then 14 ways of picking the second number. But when you are saying the number of ways of picking second number is 14, you are intuitively assuming that repetition is not allowed. Okay. So let me re-ask the question. There are 15 numbers. I have to pick two numbers. What is the probability that sum is 15? So you will ask me, sir, is repetition allowed or repetition not allowed? If repetition is not allowed, then we can go for combination or permutation. So one of the students will say number of ways is of choosing two numbers is 15P2, and another student will say number of ways of choosing two numbers is 15C2, and both may be right, because for this student 4 and 11 and 11 and 4 are two different outcomes, and for this student 411 is the same outcome, whether it is 4 plus 11 or 11 plus 4, if he counted as one thing. So for the first student, if you are doing 15P2, then the total number of ways of getting a sum of 15 is 1, 14, 2, 13, 4, 3, 12, 4, 11, 5, 10, and 14, 1, 13, 2, 3, 12, 3, 11, 4, and 10, 5. Okay. So he will say the total number of ways is 10 divided by 15P2, which will be 10 upon 15 into 14. We'll cancel it, we'll get 2, which will be 1 over 21. The other student will say, so total number of ways is 15C2, and the number of elements in event space is 5 only, because for him 114 and 14(1) is the same thing. So there are 5 cases, 114 or 213 or 312 or 411 or 510. So his answer is 5 upon 15C2, and this number will be 5 upon 15 into 14 into 2 into 1, which is same as the earlier answer, and I'll get 1 over 21. The problem comes when a student use permutation in the numerator and combination in the denominator, or combination in the numerator or permutation in the denominator. So you can use permutations by permutations. Number of sample space, total number of arrangement, number of event space, number of arrangement in the event space. You'll get the right answer. You can use combination by combination, but you cannot use permutation in one set and combination in the other set. Got it? चलो भाई हिंदी में बता देते हैं, आलोक कह रहे हैं. सो आइडिया क्या है कि मेरी मर्जी है कि मैं परमुटेशंस में 114 और 14(1) को अलग अलग मानूं या 114 और 14(1) को एक ही चीज मानूं. मेरा मन है मैं अरेंजमेंट लूं, मेरा मन है मैं कॉम्बिनेशन लूं. बट प्रॉब्लम वहां शुरू हो जाती है व्हेन हम इवेंट स्पेस निकालने के लिए तो परमुटेशन यूज कर लें और सैंपल स्पेस के लिए कॉम्बिनेशन यूज कर लें, तो फिर ऑब्वियसली आंसर गलत हो जाएगा. तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर अरेंजमेंट यूज कर रहे हैं, परमुटेशंस लगा रहे हैं,
तो दोनों को परम्यूटेशन यूज करना है और कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं तो दोनों को कॉम्बिनेशन यूज करना है। यहां तक कोई दिक्कत? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? हाँ सर। No, clear, sir. क्लियर है? तो मतलब दिक्कत है क्या? मैं दोबारा बोलूं ये बात? हाँ Question में हम स्टेटमेंट था वो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फिर से मैं बात कह रहा हूं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एनई बाई एनएस है, यहां पर जो नंबर्स हैं ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर मैं सैंपल स्पेस में ले रहा हूं तो मुझे इवेंट में भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट ही लेने हैं। ठीक है, अगर मैं 1 14 और 14 1 को यहां पर अलग मानता हूं तो यहां पर भी 1 14 और 14 1 को अलग मानना पड़ेगा। ओके, यस पर सर। अगर मैं यहां पर कॉम्बिनेशन ले रहा हूं तो फिर मैं यहां पे भी कॉम्बिनेशन लूं। गड़बड़ क्या हो जाती है, लोग एक जगह पर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, दूसरी जगह पे परम्यूटेशन ले लेते हैं और फिर आंसर गलत है। ठीक, यस सर। गुड। तो अभी क्या था कि रिपीटिशन अलाउड नहीं था, इस बार रिपीटिशन अलाउड हो गया। तो जब रिपीटिशन अलाउड हो गया तो टोटल नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए। पिछली बार मैं 1 1 नहीं पिक कर सकता था, अब मैं 1 1 भी पिक कर सकता हूं। अब बताओ, मेरे पास 1 से लेके 15 नंबर है, मुझे 2 नंबर पिक करने हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया? 15 स्क्वायर 15 P2। फिर गड़बड़ बात हुई, फिर समझ लेते हैं क्या है। 15 P2 जो नंबर है ये 15 फैक्टोरियल बाई 13 फैक्टोरियल है, जो कि 15 इंटू 14 है। ये 14 कहां से आया मालूम है? अगर मैंने पहला ऑब्जेक्ट चूज करने के 15 तरीके थे तो दूसरा ऑब्जेक्ट चूज करने के 14 तरीके क्यों होंगे? जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। मैंने जो भी थोड़ी देर पहले रिवीजन कराया, थोड़ी देर पहले जो क्लास कराई, उसमें मैं तुमसे क्या कह रहा था कि मेरे पास 1 2 3 4 5 नंबर थे, मुझे 3 जगह पे लगाना था। पहला नंबर चूज करने के 5 तरीके हैं, दूसरा नंबर चूज करने के 5 ही तरीके होंगे अगर रिपीटिशन अलाउड है, और तीसरा नंबर चूज करने के 5 ही तरीके होंगे अगर रिपीटिशन अलाउड है। तो यहां नंबर ऑफ वेज जो थे वो n इंटू n करके n टू द पावर ऑफ r आ जा रहे थे। परमुटेशन कहां लग रहा था? जब रिपीटिशन अलाउड नहीं था। परमुटेशन वाज अप्लाइड व्हेन देयर आर 5 ways over here, only 4 ways for the second place and only 3 ways, because number of available digits कम होती जा रही है। तो परमुटेशन वाज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और ये n माइनस 1 हुआ क्यों? बिकॉज मैंने एक डिजिट यूज कर लिया, मैं उसको यूज नहीं कर सकता। द होल आइडिया इज दैट नंबर विल डिक्रीज ओनली इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इफ रिपीटिशन इज अलाउड देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? बार बार। सो फिर यहां पर 15 P2 नहीं होगा। फिर से बोलो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 15 C2. नहीं, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 15 into 15 इंटू 15, क्योंकि पहला नंबर चूज करने के कितने ऑप्शन है? 15, और दूसरा नंबर चूज करने के कितने ऑप्शन है? 15. हाँ वही तो, ऑप्शन घटे क्यों? ठीक, 15 C2 का मतलब होता कि मेरे पास पहला नंबर चूज करने के 15 ऑप्शन होते, दूसरा नंबर चूज करने के 14 ऑप्शन होते, लेकिन मैंने 3 4 चूज किया या 4 3 चूज किया, उसको मैं अलग अलग नहीं देखता, इसलिए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ये होता 15 C2। तो 15 C2 में भी मैं एक चीज को बार बार यूज नहीं कर पा रहा हूं और उनके अरेंजमेंट भी नहीं देख पा रहा हूं, तो और छोटा नंबर हो गया। ठीक है ना? मतलब 15 स्क्वायर
will be greater than 15 P2 which will be greater than 15 C2. ठीक है, तो यहां पर क्या है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसलिए पहला नंबर चूज करने के कितने तरीके 15, दूसरा नंबर चूज करने के कितने तरीके वो भी 15, इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो पिछली प्रॉब्लम में 15 into 14 हो जा रहा था अरेंजमेंट सीक्वेंस में, वो अब की बार कितना हो गया 15 into 15. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ इवेंट स्पेस में केसेस वही रहे जो पहले वाले 10 थे, इसलिए मेरा आंसर 10/15 यहाँ पे रेपिटेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज मैं 15 को 7.5 + 7.5 कह सकता हूँ, 7 + 7 या 8 + 8 तो 15 होगा नहीं, तो दोनों आइडेंटिकल डिजिट से कभी भी 15 नहीं बन सकता, तो जो नंबर ऑफ इवेंट स्पेस था उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वही केस रहे 1 14 14 1 2 13 13 2, जो आइडेंटिकल दोनों नंबर हों और सम 15 हो, वैसा कोई केस ही नहीं आया. ठीक है, तो इवेंट स्पेस में कोई अंतर नहीं आया, बट सैंपल स्पेस में 1 1 2 2 3 3 4 4 15. तो पिछली बार मेरा सैंपल स्पेस क्या था, अगर मैं अरेंजमेंट्स की बात करूं तो 15 into 14 था, इस बार 15 into 15 आ गया, बिकॉज पिछले वाले सारे केसेस तो मेरे पास थे ही 1 1 2 2 3 3 4 4 15 15, ये 15 केसेस भी हम ऑलरेडी और ऐड कर लिए. इज दैट क्लियर? Yes, Sir, excuse me, sir. Sir, why have we not included the case of 9, 6, and 7, 8? Yes, sir. Oops. ये तो गड़बड़ हो गई, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. हाँ, तो फिर मेरे से गलती हो गई. 2 13 3 12 4 11 5 10 और गड़बड़ हो गई मुझसे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. 6 9 एंड 7 8, तो फिर तो गड़बड़ हो गई. ये हो गया केसेस 7 और सिमिलरली 14 1 से 8 7, तो टोटल नंबर केसेस जो मैं 10 बोल रहा था वो 7 + 7 14 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी 14/225 हो गई. आई एम सॉरी फॉर मिस्टेक. ओके, सॉरी. yes, sir. ठीक है, चलो आगे करते हैं. अब ऐसे ही क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी के. सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, वही जो बात कर रहे थे, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 5 डिजिट्स हैं, इनमें से मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैं भी इसमें एक 0 और ऐड कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा 0 केस आ जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस 3 डिजिट नंबर इज, नंबर 1, डिविजिबल बाय 5. तो पहली बात तो क्या है, यहाँ पर क्योंकि मैं नंबर्स बना रहा हूं जिसमें अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कुछ भी चूज कर ले नहीं चलेगा. हियर सिंस अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट, देयरफॉर वी कैन यूज ओनली अरेंजमेंट. द सेकेंड प्रॉब्लम है, मैंने कल की क्लास में बताया था, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 0 वी कैन नॉट यूज NPR डायरेक्टली, बिकॉज फर्स्ट प्लेस पे 0 अलाउड नहीं है, नेक्स्ट प्लेसेस पे 0 अलाउड है. ओके, सो इफ माय क्वेश्चन इज डिविजिबल बाय 5, आई विल राइट PE is equal to NE by NS. NS is total number of 3 digit numbers that I can make from 0 to 5. कोई बताएगा ऐसे कितने तरीके होंगे? Anyone? Sir, repetition. Good, 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 good. ठीक, तो जैसे ये बात आई, ऑलवेज मैं बार बार इसको छुपा ले रहा हूं, बिकॉज you have to look at it. Sorry. You have to look in the question whether repetition is allowed or not. Without that information, you cannot proceed. तो कोई भी एक केस कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, इजी था प्रॉब्लम ले लेते हैं, repetition is allowed, या दोनों कर लेते हैं. तो केस 1 is repetition
allowed. We'll do repetition not allowed after this. So repetition is allowed. Number of sample space कितने हो गए? So 5 into 6 into 6. Good. 5 5 into 6 into 6. into 6 into 6, because I cannot use 0 on the first place, 100th place. Therefore, number of ways is 5 into 6 into 6. And what is any? Anyone? So 5 into 6 into 1. 5 into 6 into 2. 5 into 6 into 2. I can put any number from 1 to 5 at this place, any number from 0 to 5 at this place, but at one's place, I can only use 0 or 5. Is it clear? Yes, sir. Okay. So number of event spaces 5 into 6 into 2. So ये cancel okay. 1 by 3. Fine? Fine? Yes, sir. Yes, no, Yes, कुछ तो sir. बोलेगा. Yes, good. This time repetition is not allowed. Good. Anyone go for the number of sample space thing? 5 into 5 into 4. So 5 into 5 into 4. Good. So first place 1, 2, 3, 4, 5. Any one number 5. Second place I can put any number but not the number already used. So out of 6 I have only 5 options left. So 5. And third place only 4 options. Now the problem comes with the event space. How do I count the event space thing when repetition is not allowed? So I'll give you a hint and then you'll go ahead. In event space, I will split my problem into 2 parts. Either my number is ending with 0 or my number is ending with 5. Okay? Because जो मेरी ये वाली अप्रोच है, इसमें there's a problem. मैंने 5 यहाँ यूज कर लिया तो मैं 5 यहाँ नहीं यूज कर सकता. ओके, और अगर मैं 5 यहाँ यूज नहीं किया, यहाँ यूज नहीं किया तो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ. तो मैं instead of looking it from the 100th place, we will look it from the ones place. Those possibilities हैं. If a number is divisible by 5, then it is either terminating at 5 or terminating at 0. Is it clear? So the total number of ways will be this plus this. So obviously यहाँ पर 0 रखने का तरीका एक ही है, यहाँ पे 5 रखने का तरीका एक ही. There is only one way of putting 0 or 5. Now fill these two numbers for me. If the last digit is 0, then what is number of ways of putting a digit over here and over here? Anyone? Sir, if last digit is 0, 16. then first one is 5, last one is 4. No, good. Not 16, 5 and 4. Since we have already used 0, we are left with 1, 2, 5, 5 numbers. I can put any number over here. And then I can put remaining 4 numbers over here. One of the remaining 4 numbers over here. So number of ways is 20. So 20 numbers are possible which end with 0. Similarly, if last digit is 5, then what are the number of ways 16. of putting a So 4 into good. This time it is 16 because I have already used 5 and I cannot use 0. So I have only 4 options over here. And once I have chosen one of them, I have only 4 options over here. So total number of ways that a number is divisible by 5 is 36. And my probability is 36, which is 9 by 25. Okay? And clearly this number is very different from 1 by 3 that we got in the last answer. Okay? So that word repetition is very, very, very important. Exact question, exact language, everything is same. Repetition allowed, repetition not allowed.
This one word will change the solution, will change the answer, will change everything. And in the pressure situation of exam, it is very easy to miss it. Okay, you have already done this question, you know how to do it. Please go ahead with it. Okay, just be very careful about that. Okay. So we have done a lot of questions with permutation. Let me pick up some questions with combination. So I have that class in which we have 20 girls and 10 boys. And I have to make a team of 6 or whatever that number is. What is the probability that there are 4 girls and 2 boys? Okay, so we'll go with NE by NS kind of a thing. So first question is, what is NS? Class of 20 girls and 10 boys. I have to make a team of 6. What is number of sample space? Anyone? 30C6. 30C6. Very good. Because over here, we have only 30 people. It doesn't matter whether they are girl or boy or whatever. There are 30 people and I have to choose 6. So number of ways is 30C6. The important thing is, since we are making a team, it doesn't matter what the arrangement is. Making a team is a selection process. It's a combination problem, not a permutation. So if I have to write a number, then 315 is different from 513. But a team in which Ramesh and Suresh are playing, it doesn't matter whether Ramesh and Suresh is there or Suresh and Ramesh is there. Okay, so number of ways will be 30C6. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, Good. sir. Yes, sir. Now let's come back to the event space. In the sample space thing, there was no issue whether there are 20 girls, 10 boys, 10 girls, 20 boys, 13 girls, 17 boys. Everything is identical because there are 30 students and we are picking up a team of 6. But in the probability thing, we have to find the probability of 4 girls and 2 boys. So obviously it becomes important how many girls are there in the class and how many boys are there in the class. So what will be the number of ways of choosing 4 girls and 2 boys from this set of 20 girls and 10 boys? Anyone? 20C2 plus 20C4 10C2. plus 10C2. Oh, so yes, good. So it is, someone said 20C2, which is obviously wrong, 20C4, because obviously we have to choose 4 girls from these 20 girls, 10C2, and someone used this word plus in between. Why plus? Plus comes with an or. Plus comes with an or. So or कब आएगा? When we have to either choose a team of 4 girls from those 20 girls or a team of 2 boys from those 10 boys. We're not doing that either or kind of a thing. We have to choose 4 girls and 2 boys. Therefore, it is a m into n kind of a problem. It's a multiplication. Good. Now, Yes, sir. another question with exactly same language is, what is the probability of choosing a team of 6 if I want at least 4 girls? So obviously number of sample space will remain same because obviously with 30 students we are choosing a team of 6. But what will be my event space? I have to choose a team of at least 6 girls. So sample space will be, anyone?
So 20C4, the first case, then 20C5 girls and 10C1 boy, and then all So girls. basically, when we are talking about at least, we are talking about 3 events: a team of 4 girl 2 boy, or a team of 5 girl 1 boy, or a team of 6 girls. So my numerator will have dash plus dash plus dash kind of a format, because they are associated with an or. I cannot have a team of 6 girls and a team of 5 girls and 1 boy. They are related by an or. So we have to split the whole problem into 3 cases which are related by an or, and then number of ways of choosing 4 girls and 2 boys is, we have already done it, 20C4 into 10C2 into, because they are related with an and, then 20C and 5 5 5 into into 10C1 10C1. and then 20C6. 6 If you want, you can write it into 10C0, because obviously that is equal to 1, so it doesn't change that. Okay? Fine? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. these words, at least, at most, they are just one word in the answer. So in the question, there's just one word, and they change the meaning of the question. And we have seen students who miss this word. They get confused between at least and at most. Okay? चलो भाई, आलोक सर कह रहे हैं at least, at most एक बार हिंदी में बता दीजिए. So if someone says at least, मुझे इसका एक क्वेश्चन है, 20 गर्ल्स हैं 10 बॉयज हैं, मुझे 6 की टीम चूज करनी, डिनोमिनेटर में 30C6 ही रहेगा. अब कोई कह रहा है एट लीस्ट 3 गर्ल्स, इसका मतलब मेरे पास कौन से केसेस हैं? 3 गर्ल्स 3 बॉय. एट लीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है वी कैन हैव 3 गर्ल्स और मोर देन 3 गर्ल्स. 3 से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम 3 है, 3 से ज्यादा कर सकती हैं. तो मेरे केसेस कौन से हो जाएंगे? 3 गर्ल्स 3 बॉय प्लस 4 गर्ल 2 बॉय प्लस 5 गर्ल 1 बॉय प्लस 6 गर्ल 0 बॉय. लेकिन अगर यही वर्ड होता एट मोस्ट 3 गर्ल्स, तो मेरे केस क्या हो जाते? 3 girls. The 3 girls will be the highest, and will 3 play बॉय all the girls less than 2 that. गर्ल्स 2 4 girls, बॉयज. 4 boys. ठीक है? हाँ, बिकॉज आपकी बार मेरे नंबर घटने लगेंगे. एंड जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि मेरी क्लास में खाली 5 ही लड़के हैं, ये ध्यान देने वाली बात है. तो फिर ये 1 गर्ल 5 बॉय पे टर्मिनेट कर जाएगा आदमी, प्लस 0 गर्ल 6 बॉय. सोचेगा फिर परेशान हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता. ठीक है ना? तो होल आइडिया इज कि हमें ये एट लीस्ट और एट मोस्ट इस वर्ड पे बड़ा फोकस करना है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बिकॉज मेरी बैक टू बैक 2 क्लासेस हैं. छोटा सा ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, 7 मिनट का, और फिर हम लोग इसको आगे ले चल करके जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम उस तरह के जो क्वेश्चन है उन पे आकर के बात करेंगे. ठीक है? तो विल टेक अ ब्रेक ऑफ अबाउट 5-7 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट अगेन. थैंक यू. Thank you, sir.